आज के टॉपिक्स हैं हमारे डेवलपमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस। दूसरा हम बात करेंगे फोरेंसिक साइंस की हिस्ट्री के बारे में। फिर हम बात करेंगे केमिकल एग्जामिनर्स लेबोरेटरी के बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ केरला के अंदर मद्रास में है। मेन फंक्शंस उस लेबोरेटरीज के क्या हैं और उनकी क्या क्या डिविजन्स हैं लेबोरेटरीज के अंदर। तो आज हम इन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और जितना हो सके आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प करें, शेयर करें इन चैनल्स को, इन लेक्चर्स को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये लेक्चर्स और ये जो जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, फोरेंसिक साइंस कोर्स से रिलेटेड और लॉ से रिलेटेड, जितने भी आपको इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं यहाँ पे, वो दूसरे बच्चों तक भी पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आप। Development of forensic science. The application of science and technology to the detection and investigation of crime and administration of justice is not new to India. तो आपको अपने बहुत पुराने शास्त्रों के अंदर हमारे इनके रेफरेंसेस, फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड आपको बहुत सारे रेफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि एक है कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंदर, जो कि 2300 साल पुराना है। India studies various patterns of the papillary ridges 1000s of years ago. It is assumed that they recognize the persistence and individuality of fingerprints which they used as signature. तो सिग्नेचर के रूप में हम काफी टाइम से फिंगरप्रिंट्स को यूज करते हुए आ रहे हैं। जो इलिटरेट लोग थे उन लोगों के पहले साइन पेन्स यूज करना उन लोगों को नहीं आता था, तो उनसे पहले अंगूठा लगवाकर साइन करवाया जाता था। The Indians saw for long that the handprints called the Tarija were unique. The use of fingerprints as signatures by illiterate people in India, introduced centuries ago, was considered by some people as ceremonial only, till it was scientifically proved that identification from fingerprints were infallible. तो पहले सेरेमनी के लिए ही हम यूज किया करते थे फिंगरप्रिंट्स को, बट ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हुआ बाद में और इसको रिकॉग्नाइज किया एज अ फिंगरप्रिंट वर इनफेबेबल। तो डेवलपमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस बहुत ज्यादा पुराना है, जिसे हम काफी टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी इंडिया के अंदर एग्जिस्टेंस मद्रास में आया था 1849। First chemical examiner laboratory in India came into existence in Madras in the year of 1849. Pre-independence में मद्रास के अंदर आपको 1849 याद रखना है। फिर उसके बाद इसकी ब्रांचेस सेटअप हुई कलकत्ता, आगरा, बॉम्बे में। कलकत्ता में 1853 में, आगरा में 1864 में और बॉम्बे में 1870 में केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी सेटअप किया गया। Examiner laboratories were established in India to render independent scientific service to criminal justice administrative system. The first chemical examiners laboratory in India came into existence in Madras in the year 1849. Chemical examiners laboratory in Kerala started functioning in the year 1890 under the order of government as part of health department. 13 जून 1969 को होम डिपार्टमेंट एज इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट के अंदर केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी इंडिपेंडेंटली वर्क करना स्टार्ट किया। इट वाज स्टार्टेड एज अ सिंगल लेबोरेटरी इन त्रिवंतपुरम, later to meet steady increase in the volume of work and to ensure speedy disposal of chemical legal work. Regional chemical laboratories also established in Kozhikode and Ernakulam in the year 1888 and 1889 respectively. Chemical Examiner Laboratory Department is headed by Chief Chemical Examiner at Trivandrum and he is assisted by 2 joint chemical examiners. Each regional chemical examiner's laboratory is headed by joint chemical examiner. So Government of Kerala के मद्रास के अंदर chemical examiner laboratory establish हुई, जो कि 1849 के अंदर existence आया इंडिया के अंदर। Chemical Examiners Laboratory, Government of Kerala
Chemical Examiner Laboratory caters to the need of the judiciary in the prosecution of crimes. The Chemical Examiner Laboratory was established in 1890 in the erstwhile princely state of Travancore exclusively for the detection of crimes. The chief chemical examiner to government is the head of the department and scientific expert under Section 293 of Criminal Procedure Code. The Chemical Examiner's Laboratory is now functioning under the direct control of government in the Home Department. The technical work of the laboratory is of confidential in nature and the officers analysts are expected to maintain secrecy at every stage of analysis and are not expected to disclose the details of analysis to others. The officers are expected to maintain high degree of intellectual honesty and integrity. Three laboratories are functioning under this department. The headquarters laboratory has jurisdiction over 5 southern districts, namely Trivandrum, Kollam, Padmantha, Kottayam, Alappuzha. The Regional Chemical Examiners Laboratory Ernakulam has jurisdiction over central 4 districts. ये 4 districts हैं, इनके jurisdiction के अंदर आते हैं. The 5 northern districts, namely Malappuram, Kozhikode, Kannur, Wayanad, and Kasaragod, come under the jurisdiction of Regional Chemical Examiner Laboratory, Kozhikode. Exhibit pertaining to offences punishable under IPC, NDPS Act 85, Abkari Act, EC Act, and MNTP Act, MV Act, Explosive Act, etc. are examined in various divisions of the laboratory and certificates of chemical analysis are issued. Chemical examinations of material objects involved in various crime cases like murder, human and animal poisoning, narcotics, explosive, economic offences, and abkari offences, etc. are examined respectively in toxicology, narcotics, journal chemistry, and excise divisions. Chemical and serology examination of material objects involved in murder cases and sexual offences are undertaken in the Serology Division. The reports of chemical examiners are admissible as evidence in the court under Section 293 CRPC, so it is very important to define various steps and procedure followed in the department in the connection with handling of exhibit samples, issuance of certificates of chemical analysis, and keeping of records, etc. With a view to achieve the above goal, the Manual of Chemical Examiner Laboratory Department is prepared. This manual is expected to be followed in the laboratory by all technical and non-technical personnel. चलिए अब बात करते हैं लाइन डिपार्टमेंट्स के बारे में. केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी के अंदर लाइन डिपार्टमेंट्स क्या क्या हैं? तो फर्स्ट लाइन डिपार्टमेंट जो है वो है त्रिवंतपुरम के अंदर. फर्स्ट केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी इन केरला स्टार्टेड फंक्शनिंग इन केरला इन द ईयर 1890 अंडर द ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट. Chemical Examiner Laboratory was brought under Home Department as an independent department from June 1969 and continuing as such. Initially it was started as a single laboratory in Trivandrum में start की गई थी as a single laboratory. Now 2 regional laboratories were started in Ernakulam and Kozhikode. The headquarters laboratory जो है वो त्रिवंतपुरम में है, has jurisdiction जिसके अंदर 5 southern districts आते हैं. So ये फर्स्ट जो थी लेबोरेटरी सिंगल लेबोरेटरी वो त्रिवंतपुरम में स्टार्ट हुई थी. सेकेंड लाइन डिपार्टमेंट जो है वो रीजनल केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी का एर्नाकुलम में आता है. ये फंक्शनिंग करना स्टार्ट किया इसने 1989 में. रीजनल केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी एर्नाकुलम वाज एस्टैब्लिश्ड एंड स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 1989, जिसके रीजनल लेबोरेटरी के अंदर 4 सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आते हैं: एर्नाकुलम, थ्रिसुर, पलक्कड़, इदुक्की. सो ये सेकंड लाइन डिपार्टमेंट है जो कि एर्नाकुलम में है. थर्ड लाइन डिपार्टमेंट की बात करें तो रीजनल केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी के अंदर कोझिकोड के अंदर आता है. रीजनल केमिकल एग्जामिनर्स लेबोरेटरी कोझिकोड वाज एस्टैब्लिश्ड एज पर एंड स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 1986. रीजनल लेबोरेटरी एट कोझिकोड हैज जुरिडिक्शन. 5 नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इसके अंदर. सो ये थर्ड लाइन डिपार्टमेंट है.
जो कि कोरिकोड के अंदर है। केमिकल एग्जामिनर्स लेबोरेटरी के अंदर डिविजन्स की बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या डिविजन्स हैं इसके अंदर, किन किन एरियाज के अंदर ये लेबोरेटरी काम करती है। फर्स्ट डिवीजन जो इस लेबोरेटरी में आता है वो है एक्साइज डिवीजन। एक्साइज डिवीजन आर्टिकल्स इन्वॉल्व्ड इन आबकारी केसेस आर एग्जामिन्ड एंड रिपोर्ट्स फर्निश्ड टू वेरियस कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ आबकारी ऑफेंसेस. The liquor samples collected from licensed shops are also examined in this division for detection of adulteration. Liquor samples from distillery and blending units are also examined in this division. A total of 17,000 cases comprising of 49,000 articles were examined under this category during 2017 to 2018 year. Tinctures and other medicinal preparation under MNTP Act are also examined in the excise division. The chemical examiner to government is declared as the competent authority to assay the tinctures manufactured in the various pharmaceutical in the state, to certify the percentage of ethyl alcohol present in them. During the year 2017-18, 65 cases comprising 1026 samples were examined and reports forwarded to the Board of Revenue. Since the medicinal preparation can be released only after the receipt of the report of chemical analysis, the assay of the sample was carried out with the least possible delay. तो चलिए नेक्स्ट डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन हमारा जो नेक्स्ट डिवीजन है वो है जनरल केमिस्ट्री। Explosive substances forwarded by the Controller of Explosive of India and other material objects involved in Essential Commodity Act forwarded by various courts in the state are examined in this division. Any other articles, the examination of which is considered essentially by the court for the prosecution of crimes, are analyzed in this division. Thus, diesel, oil, petrol, cement, kerosene, etc. were some of the articles beside explosive and products of explosion examined in the division. During the year 2017-18, 176 cases comprising of 533 articles were examined in this division. So, explosive substances और उसके अलावा prosecution of crime के लिए कुछ essentially जो articles हैं उनको भी जर्नल केमिस्ट्री के अंदर एग्जामिन किया जाता है। नार्कोटिक डिवीजन। The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 was enacted by Parliament to consolidate and amend the law relating to narcotic drugs and to make stringent provision for the control and regulating of narcotic drugs and psychotropic substances. The act was subsequently amended in 1989, which came into force on 29th May 1989. Considering the great importance attached to the control of illicit drug traffic and drug abuse at national and international level, to cope with the large increase of the cases in our state, a separate narcotic division was sanctioned in all three laboratories under this department. During the year 1718, a total of 2,248 cases comprising 3658 articles were examined in this division. Next division, Serology Division. Various articles like blood-stained clothes, weapons, stain of other body fluids, etc. involved in murder cases are examined for the detection and identification of the origin of blood group in this division. The articles like clothes, hair, vaginal swab, and other biological materials involved in rape and other sexual offences cases are also examined in this division. The work carried out in this division during the year under report is given below. Article involved in murder cases, a total of 107 cases comprising of 332 articles were examined under this head during 1718 year. Article involved in rape and other sexual offences, a total of 1,625 cases involving 7,370 articles were disposed of under this head during this year 1718.
सो इन डिविजन्स के अंदर मोस्टली 17-18 के अंदर जितने भी आर्टिकल्स एग्जामिनेशन एनालिसिस की गई है उन्हीं के डेटा दिए हुए हैं और इनको अपडेट नहीं किया गया है। बेसिकली ये सारे डेटा इन सभी डिविजन्स के अंदर आपको ईयर 17-18 2017 और 18 के एनालिसिस वाले आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो कि अभी अपडेट नहीं किया गया है वेबसाइट पर अदर केसेस के बारे में। सो आपको इसी ईयर के केसेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन। In this division, postmortem materials of suspected human poisoning and unnatural death cases are examined for finding cause of death in such cases. The sample like collected during postmortem blood and other biological materials such as stomach wash, urine, vomit collected from the persons undergoing treatment for poisoning, and skeletal remains in exhumation cases forwarded by medical officer of government hospitals, police surgeon, and investigating officers and court are examined for identification and estimation of poisons. Similarly, specimens of animal poisoning cases forwarded by the veterinarian doctors are also examined in this division for detection of poison. Blood and urine sample collected by medical officers in drunkenness and motor traffic accident cases are also examined in this division for ascertaining blood and urine alcohol level. Human poisoning cases in Toxicology Division 3,552 cases of vice versa comprising of 11,666 articles were analyzed during this year. Animal poisoning cases 31 cases comprising 262 items were examined during this year और drunkenness 171 cases comprising 257 items were analyzed in under this head. सो ये सारा जितना भी डेटा एनालिसिस दी हुई है ये ईयर 2017 टू 2018 के लिए दिए हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं लेबोरेटरी के मेजर फंक्शंस के बारे में। The articles referred to for examination in the laboratory can broadly be classified under the following categories. Articles suspected to be stained with blood in murder cases. Articles suspected to be stained with semen in sexual offenses. Stomach wash, blood vomit, other materials object in human poisoning cases. Article involved in animal poisoning cases. Illicit rack, wash, foreign liquor, etc. under the Abkari Act. Sample of toddy and foreign liquor collected from licensed shop to check adulteration. Opium, ganja, brown sugar, heroin, cocaine, drugs, etc. under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. Samples of blood and urine collected from person involved in cases of drunkenness. तो ये सारे जितने भी आर्टिकल्स दिए हुए हैं ये इस लेबोरेटरी के अंदर इनका एग्जामिनेशन किया जाता है। ये सारी कैटेगरीज है जिन पर ये लेबोरेटरी अब फंक्शन करती है। Miscellaneous articles such as explosive, petrol, kerosene, diesel oil, gold, foreign liquor, palm oil, etc. Wort and beer and breweries under brewery rule. Foreign liquor, rectified spirit, molasses, spent wash, denaturants and denatured spirit, etc. From distilleries. Indian made foreign liquor for Bureau of Indian Standards specification. So ये सारे आर्टिकल्स भी हैं जिन पर मेजर फंक्शंस लेबोरेटरी करती है। सो लास्ट लेक्चर में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डज द टर्म फोरेंसिक मीन? Pertaining to medicine, pertaining to crime, pertaining to the law, pertaining to death. जिसका सही आंसर जो है वो है pertaining to the law. What does the term forensic mean? Pertaining to the law.